एक काम करते, कमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर लेगा। ओके श्योर। हाँ जी, तो जैसे हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, तो लास्ट क्लास में हमने एंड में पढ़ा था आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आई थिंक वहां तक किसी को क्वेश्चन नहीं होगा। 13 क्लॉज 4 जो ये था कि अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। किसी को उस पर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर करना हो तो वो पूछ सकते हैं, या फिर हम फर्दर प्रोसीड करें आर्टिकल 14 पे। प्रोसीड करते हैं 14 पे। ओके श्योर। एक्चुअली ये आर्टिकल 14, 15 एंड 16 है। बेसिकली ये 3 आर्टिकल, ये एक क्लब है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के एक पॉइंट के नीचे आता है। अंडर द सब हेडिंग हम कंसिडर कर सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में, और वी कैन से द इक्वलिटी के प्रोविजंस को प्रमोट करता है। आर्टिकल 14 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो ये 2 मेन पार्ट कंपोनेंट हैं, ये आर्टिकल 14 में कंसिस्ट करते हैं। और इसमें से अगर हम फर्स्ट को देखें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, the equality before law, it is not only restricted to the citizens of the constitution। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसके लिए बनाया जाता है, द बेसिस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो ये है कि सिटीजन्स के राइट्स को इंश्योर करने के लिए कि उनको कोई उनसे ना ले। बट जो आर्टिकल 14 की जो अडेप्टेबिलिटी है, इन्फोर्सिबिलिटी है, वो सिटीजन्स तक नहीं है बट एलियंस पे भी है। बट उसके साथ एक क्लॉज है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर द एलियंस भी है कि इक्वल प्रोटेक्शन के लिए, बट वो जो ग्राउंड है एलियंस का, वो इतना नहीं वो अपने राइट को कंसिडर कर सकते कि कुछ राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड है सिटीजन्स के लिए, वो भी इनको ग्रांट किया जाए एलियंस के लिए। जैसे कि इसमें से सबसे बेटर राइट हुए, लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, वो था सिटीजनशिप का। एलियंस कैन नॉट डिमांड कि हमें भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजनशिप होनी चाहिए, कि इक्वल बेसिस पे जैसे बाकी सिटीजन्स को होती है। देन इक्वलिटी बिफोर लॉ से मतलब क्या है, ये तो आप लिटरल सेंस में तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे। अगर इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन पर जाया जाए तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। द डाइसे का जो प्रिंसिपल था रूल ऑफ लॉ, उसका ही प्रोविजन है जिसको हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में लाया गया है। आर्टिकल 14 में और जो डाइसे का प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, it consists of 3 main principles: supremacy of law, equality of law and predominance of legal spirit। सुपरमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये है कि एक स्टेट है जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड स्टेट है, उसमें जो जो फर्दर जो हाईएस्ट है, एवरी ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव एंड एवरी और लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल, सभी 2 लेजिस्लेचर के लिए कुछ प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं, बट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लॉ सबको द लॉ इज सुप्रीम, नो वन इज अबव द लॉ। कि जो लॉ है, जो प्रोसीजर लॉ का है, वो सबके लिए इक्वल है और सबको वो फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट इज काइंड ऑफ नेगेटिव कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और किसी को भी अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा until and unless specifically mentioned by the constitution itself। And third is the preponderance of the legal spirit। It is also considered as one of the basic and most important principle of all of these principle of rule of law। preponderance of legal spirit means कि अगर हमने लॉ तो प्रोवाइड कर दिया, but we need code। the legal spirit means they should be a system of the court system, the court, those who are controlling and safeguarding these rights of the people। The functioning of judiciary and the independence of judiciary is that much important if we want to achieve the principle of the equality। And the next part जो इस आर्टिकल 14 का है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो एक लिटरल सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग मतलब ही है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। That means a positive treatment, ensuring equality of treatment to all the citizen, in all the people, those who are equal under the equal circumstances। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नोटिस करने के लिए कि अगर हम इक्वलिटी की बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तो किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी का अगर स्पेशल किसी को भी प्रिविलेज या प्रेफरेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए, किसी को स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए। बट वहां पे ही जो इंटरप्रिटेशन आर्टिकल की हम टोटली वेग या मैथमेटिकल वे में नहीं कर सकते। जैसे 2 + 2 = 4 है, वैसे हर
इंडिविजुअल के लिए एक इक्वल कैटेगरी बनाई जाएगी, इक्वल लॉ। आर्टिकल 14 विद इन इटसेल्फ वो इस चीज की यानी कि हमें एक हम कह सकते हैं कि हमें एक असूलियत देता है कि इट गिव्स अस अ कंडीशन कि वी कैन मेक इट क्लासिफिकेशंस। आर्टिकल 14 के अंदर ही है कि क्लासिफिकेशन में बना सकते हैं कुछ पर्संस को, क्लास ऑफ पर्सन को, इवन अ सिंगल पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट और क्लासिफाइड फ्रॉम अदर क्लास ऑफ पर्सन। इस चीज का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में विद इन इटसेल्फ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने विद टाइम एंड टाइम अगेन इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन, that can we do a discrimination which can be considered as positive discrimination। एंड उसके लिए एक दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हेन क्लासिफिकेशन कैन बी डन। और क्लासिफिकेशन इसलिए की जा सकती है कि इफ अ स्टेट थिंक्स देयर इज अ नीड फॉर द स्पेशल treatment, or we cannot say special treatment, we can say equal treatment, those who are being discriminated because of some other socio-economic political backgrounds or historical events or symbolical things which were out of the control of the present society। एक चीज हमें हमेशा नोटिस करनी होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हैज आइडियलाइज्ड सोसाइटी। ये पहली एग्जिस्टिंग सोसाइटी को नहीं मान के चला है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेटस को ऑर्डर था हमने उसको मेंटेन करना है। इट इज अ विजनरी इन इटसेल्फ। इसका हमेशा आइडिया ये है कि वी आर देयर टू फॉर्म अ न्यू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उनके बेसिस पे देयर इज अ ग्राउंड एंड देयर इज अ स्पेस फॉर दिस क्लासिफिकेशन, बट देयर इज टू थिंग फॉर द क्लासिफिकेशन, देयर इज अ टेस्ट फॉर द क्लासिफिकेशन, दैट द क्लासिफिकेशन when the classification is done there should be intelligible differentia। That means कि the difference that the legislature or the state has done for to give a special treatment to a specific class of person, it should have some intelligible differentia. There should be a reasonable classification. The classification should not be on the absurd or any mathematical calculation or anything of that type, but it should be reasonable. And the term reasonable, it is a very vague and it is very we can say exhaustive term. That is a work of the code or to define what do they mean by a reasonable at a particular period of a time. What was reasonable in 1500 cannot be stated as a reasonable now. See how law works. It works on the, we can say if we treat what is a law, it works, it can be treated as a polished common sense. We cannot say that law is something that is been found out. It is just a polished common sense of some people who are considered as political superior or those who we idolize in our society. We can say that is what the law is formed of. And instead of that, and in by applying that thing, if we have to form that a particular classification is reasonable, that is a work of constitution. And for looking whether the classification was reasonable or not, we have to go to the various provision of the constitution and the principle of the constitution, how they define the reasonable. And second is that there should be a nexus between that, there should be a relationship between the differentia formed and the objective of the law that state want to achieve. These are two basic grounds for determining whether a classification is reasonable or not. And with the passage of time, after following the due process of law in Maneka Gandhi case, the ambit of the defining a classification is reasonable or not has become much more broader. Now the principle of natural justice, instead of the principle of constitution, the principle of natural justice are also included for defining whether the classification which was done is reasonable or not. And what are the principles of natural justice? It says that any action of the state, it should be a fair, just, and reasonable. Again, the word just reasonable is used there. And if we go on, that these are three things we should define whether the classification done under the constitution, under the ambit of constitution, is a reasonable or not, a valid one or not. If it is not a valid one, or it is arbitrary, the word used is arbitrary. Arbitrary means anything which is done not by not specifically mentioning. Yes, Sachin. Okay.
Should I continue? Yes. Okay. So this is a test for mentioning the classification, how the classification can be done. And one more thing is, by when we are doing a classification for the class of person, the constitution itself and the Supreme Court on the various term has also defined that the classification should not convert or become class legislation. There's a difference between classification and class legislation. Class legislation means differentiating between the same class of person. That means, we, like, I can take example here that we have a reservation provision for ST and SC communities and OBC, other backward classes, and now we also have a provision for the economic backward classes, economically weaker sections. So, but within, like, take example of SCs. Within SCs, there are different categories of castes. There's a ultimate hierarchy within the SC community also. So if we make some certain provision that granting some special favor to one category of caste within the scheduled caste to the other category of caste, in that case, that is not allowed on the constitution, because that leads to class legislation. Class legislation means that we are giving a special or particular benefit or favorism to a particular person within the same kind of person. Like for women, we cannot make provisions for like in panchayati system under Constitution Amendment 73 and 74. We have made provision for reservation of not less than 1/3 of in panchayati seats for the panchayat, and within that we cannot make a further reservation for women. The women, those who, like, we can say the women those who are above 50 or above 40, or we can say this reservation will only be given to the women who are educated. The illiterate woman cannot avail this reservation under the panchayati system, panchayati era or 73rd or 74th amendment. That cannot be done. That will lead to a class legislation, because there's no, it is done on the arbitrary basis, and there's no interpretation or no reasoning why the particular class of women should be preferred over the other class of women. It is on the basis of gender is applicable to avail that reservation. Am I clear on this point? And another point of the Article 14 is that and another thing is that in a particular case, Supreme Court also stated that we are using this classification procedure as too much to define, because there's always a trend when certain kind of cases are presented before the case, or court decide on anything, or incorporate or interpret any law. There are various kind of PILs related to that provisions. It comes within a short passage of time. Various people are filing cases related to same issues just for any purpose, any mean. Maybe they have any justified reason or not. That the Supreme Court has also framed a guideline that the reasonable classification, the classification and this reasonable term that we are using under Article 14 quoted by Supreme Court, it is a good servant, but it should not be used in such a way that it becomes a master of the Constitution. From this, we can understand that we cannot take a single provision of Constitution in isolation to other provisions. If we are doing that, it is not a good or healthy for the overall functioning of the Constitution. Though classification and the reasonable function is given there, provision is given there, but it ultimately depend upon the court that how they have to interpret or frame these laws. I think this much is enough from your examination point of view. And one more thing I want to add in, this is a basis of
classification. Some of the cases, in some of the classes of cases, where the Supreme Court has defined what kind of the classifications are allowed, and these classifications are like on the geographical basis, historical basis, nature of business, time, and many other. But these are some kind of categories of classification which are allowed under Article 14. But provided that the action of whatever classification is made, it is not arbitrary, it is not against a principle of natural justice, and it should not be a class legislation. These are the main thing that we have to incorporate in our understanding of the Article 14. Next, moving on to the Article 15. If you can read the overall provisions of the Article 15, it is a prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, or place of birth. When we read the Article 15, there is one interesting thing that the term there is used is only on the ground of religion, caste, sex, or place of birth. Can anyone tell me what does this only in this article, in this provision determines you, or what you incur from this word only used in this article? Can anyone answer? Okay. Can you please repeat the question? Actually, if we read the provision of the Article 15, there is a word written, the prohibition of discrimination. There should be no discrimination only on the ground of religion, caste, sex, or place of birth. The word only is used before mentioning the grounds on which there can be no discrimination. What the word only, what do you resemble from the infer from the word only here? What does it resemble, or what is your understanding from the word only? What it determines here? Discrimination can be made by the state or other subjects. So, for example, someone is rich, right, and some policy is being made for the upliftment of poor. So yeah, so some laws may be discriminated to the rich. Yes, you cannot say rich, or it can be say economic background. Rich word, it is not a technical term. Okay, sure. Okay, I understand your answer, and it's absolutely right that the Article 15 gives only these ground for which there should be no discrimination first. And the second part of the article states that in access to a public places, there should be no discrimination on such ground as religion, caste, sex, or place of birth. It can be done on the basis of geography, on your hometown or geography address, because place of birth is something different, or your domicile, it is something different. Okay, it can be done. Thus, the Constitution itself provides the ground for the classification that can be done, or the positive, or the term which we use as a positive discrimination, but the term used by the code is a positive discrimination. It can be done on any another ground. Same ways, and if you go on to Article 15 Clause 3 and 4, you will understand that in 15 Clause 3, the code has made give a relaxation or exception to make provisions for women and children. Like Article 21A, we can say right to education. It is only made up to the age of 14. It can be inferred as one of the ground. Why only up to the age of 21? Why it is not up to the age of university level, or up to age of 40, or for any category of age? A person belonging to any category, they can attain education. And third is Article 15 for special provision for the women. And one thing we have to understand is that why these special classifications or categories are being made. These are being made just because of the historical discriminations and the violence or suppression or oppression, we can say anything that these different communities and classes of people have suffered because of the dominance of the particular few, a chosen few in the social system. Because before 1947, what we had was not we cannot say it was a just and equitable
system. Now, after incorporation of constitution, we have taken the duty to form an space of society which is just and equitable to everyone. So, in the long run, if we go on on understanding, like nowadays they are men right activists. Okay, they are men right activists. Those who are always saying that we do have this problem or we do have that problem, or that men do face this domestic violence. Okay, there are a number of cases that why they are not special provisions for us. So, like in domestic violence, also the preference is going to a woman. They will say that we have this thing or that thing. But the main thing they have to understand that from the historical perspective, who have the hegemony over these resources? Who have the authority over the administration of justice or administration of law in a particular system? These were the few men of belonging to a particular caste, class, or religion. Those who are predominantly have the hegemony of the system. Thus, in order to overcome that hegemony that they have created, we make special provision to bring everyone on the equal line. These classifications or this reservation doesn't mean that we are giving someone a relaxation to confront in the line. By all these provisions, we are bringing them on an equal line to race, from where they can start their race on an equal line. It is not like that we are giving something like for this. I'm going out of the class. For this, you can read the idea of justice by Amartya Sen. What he has stated? He has stated that the equality of opportunity is not everything. That making just institution or giving opportunity is everything. Increasing the capability of the individuals is the basic demand of the justice. We cannot expect everyone by giving them an equal opportunity that you will be able to do equal in equal circumstances. For that, the capability has to be increased. Capability, like we cannot say that there was an open examination for all students from all over India. Some of us are sitting in Delhi, studying in this high institution. Some of us are belonging to the backward classes where government has failed to provide any facility or better education system. We cannot say that both were allowed equally to sit in an exam and do equally good. It is not possible. These political and socio-economic conditions, these matters. These are the main thing that matters under these. That's why to uplift the previously historically discrimination, we have incorporated these laws. And though in the simple reading you will not find that the classification is given or not, but there is something called constitutionalism that I have said, the unrated constitution that has been developed by Supreme Court and our legal jurist, with the passage of time, with their understanding of these provisions and implementing various theories of rights and everything. Okay, I will stick to the topic again. And next is Article 15, and under Article 15 Clause 4, there is a provision for socially and backward classes, provision for making special laws for the advancement of socially and backward classes of citizen. We can say SC and ST, but after the Mandal Commission case, it was extended over to the other backward classes also. Okay. And there was one more point that for determining a backwardness of class of people, the Supreme Court has stated the caste is not the only ground. Whatever Supreme Court has stated, that doesn't mean it is always perfect or it is always right. There's always chance of a criticism or the antithesis of what Supreme Court has said or any jurist has said. Because with the passage of a dynamic of society concept and recognitions of the terminologies or the concepts, they keep on changing. But according to Supreme Court, social backward cannot be determined on the basis of caste, but it should basis of caste, but it should be also on the basis of result of poverty, one's occupation, habitations, and numerous other X factors which should be play a key role in determining whether a particular caste is a backward or not a backward. Okay.
And then, and now after article, I think after 103rd amendment, the provision of 15 clause 6, which one was added? The economically weaker section provision was added, and 10% reservation is been allotted to them. Okay, next article 16. Equality of opportunity in matter of public employment. This article 16 goes vis-a-vis with the 14 and 15, and it is also in 15 we have studied about there should be no discrimination, and this one talks about providing equality of opportunity. First provision, there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. That means the state cannot discriminate to any particular person on the basis of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them. See, here there are two new words from the Article 15. First, here descent and residence. It means there cannot be any equality of there should be no discrimination, but discrimination can be done on the basis of descent and residence. But in providing opportunity, the code have given a more the constitution has given a more extended view that a descent and residence are also two key factors for determining whether discrimination has been done or not. But under Article 16 clause 3, I think, wait a minute. The parliament can, I think under 16 clause 3, the parliament can make a law giving special preference on the basis of residence, I think. Wait a minute, let me check. Under clause 16, empower the parliament to make any law prescribing in regard to class or class of employment or appointment to any office under the government or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to a residence within the state or union territory prior to such employment or appointment. Thus, there is an exception to the above stated provision of clause 2 in clause 3, which can be done by the parliament only. Okay. And the clause 4 states that the article expressly permits the state to make provision for the reservation of opportunity, a post in favor of backward class of citizen, which in opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. See, here under 16 clause 4 and 15 clause 4, they goes vis-a-vis for the reservation. Both of these articles are the reason for the reservation. That 15.4 gives a provision for making any law for the betterment or advancement of the backward classes, and 15.4 gives states the power to make a special provision or reservation, like a reservation in the appointments or opportunity under the office of state. And one more thing is that under 16 clause 4, there is also provision of reservation is given in the service of the state. Plus, there is also a provision of reservation in promotion. And for the better understanding of reservation in promotion, it is also mentioned as a ground, and there have been various instances of whether reservation in promotion is a fundamental right or not. There are series of cases on this. I can suggest M. Nagaraj and B. K. Pavitra. And these two are the best judgment. You can refer to this point on the reservation in promotion. When talking about the reservation, there is also one more concept regarding to reservation. That is, these two kind of reservation. One is a vertical and another is a horizontal. Anyone know about this? Anyone? What is horizontal reservation or vertical? Have you ever heard about it? These two terms.
Okay, I will continue. Uh, by meaning vertical reservation is used for the reservation of backward classes like SC and ST or OBC that are on the basis of these prescribed in education or in any in jobs or any opportunity, the reservation provided to them. That means it goes vertically, it goes within that category or class of people. It doesn't go horizontally or anywhere out of that. But these class of categories, for say we have 3 5 15% for the SCs. So the 15% of these seats are to be filled by the peoples belonging to the SC community, not by the people of any other community. But vis-a-vis there, we have another kind of reservation, that is horizontal. Horizontal refer to the special kind of, like for the women. We have reservation for the women. Take example of the panchayati system. There is 1/3 reservation for the women, and plus there is under provision of constitution there is a reservation for the SC and ST communities in the electoral process, also in the representation. So if any woman belonging to SC community uh, is elected under the post of this, or for better understanding, you can take the example of is awarded seat under this provision of the constitution, then we cannot say that the one person from SC has shifted to the woman category, so there should be a less number of person in the SC category. Take example of handicaps. If there are 2 seats for a handicap can be any person, can be it can be a woman, it can be a man from upper caste or from the SC or ST community. It can be from any person, can be a handicap. If there are 2 seats available for a handicap, one of them is occupied by the person handicap belonging to a ST community, and there are 4 seats reserved for ST community under the ST quota, then we cannot say that one person is shifted here and now there will be only 3 persons. Overall, we have to consider. But it can be case in another scenario, it goes on the vertical basis. That ST handicap can be a man. If it is not a man, it can be a woman. But in cases of reservation belonging to a SC and ST community, it is a vertical. It is between that community only. It doesn't changes his class. It remains within one particular class of community. Okay, then the next article, abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. And for untouchability, it can be of any kind. It can be if we cannot practice any kind of untouchability on the basis of anything, on the basis of gender, on the basis of caste, on the basis of religion, or anything. We cannot practice untouchability because if, and there's one more thing, why the abolition of untouchability has been specifically mentioned under provision of constitution. Some say that we can infer it from the Article 14 or from the discrimination or Article 15, which prohibits the discrimination. But why it has been specifically mentioned under this? If we go on to the constitution debate, it has been clearly mentioned that because untouchability was a social practice, which in India, and it was not the discrimination can be done when you are under any authority or any official post or that kind of. But untouchability was a practice which was at the root of our basic social system, and it is necessary to eradicate this evil from our social system. That's why it has been specially mentioned. And the untouchability, it is being practiced out of the premise of the state. It is something which occurs at our social level also. Only that's why it is very much important to mention it differently from other provision, and particularly specifically in the constitution. And under this Article 17, state is also empowered to make any law to regulate or punish any person who practice or to regulate this crime of untouchability. Only under this article, with the consequence of this article, SC and ST Act, Atrocity Act has been enacted.
Next, Article 18, abolition of title. No title not being a military or academic distinction shall be conferred by state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while hold any office of profit or trust under the state, except without the consent of a president any title from any foreign state. No person holding any office of profit or under the state shall, without the consent of resident, accept any present emolument or office of any kind, form, or any under any foreign state right to foreign state. Okay. The Article 18, see, it talks about the abolition of titles. Before 1947, there was title given like Jalda, or different kind of, like, I belong to a northern part of our country. The title that I know at the these are on the ground level, these are Jaildar or Thanedar, Thekedar. These are particular titles which are, or like we can say royal word or something, which shows or indicate the historical dominance of particular class of person or particular family or particular community. These were not allowed. Abolition. Another thing is that the citizen of India cannot accept the titles from the countries, from the other states, other foreign countries, because it question on the sovereignty of the India. That if you are living under India, you are uphold and you are regulated with the sovereignty of the India, the country India. And if you are accepting, or that's mean you are indirectly avoiding or accepting the sovereignty of other country over you, and you are the citizen of India. But the provision can be made with the consent of president, who is considered as the head of a state. He can give relaxation in relation to the acceptance of any title. Okay. Now next, Article 19. Uh, Article protection of certain freedom regarding speech, freedom of speech and extra. 19.1. All citizens shall have a right. First, 19.1a, to freedom of speech and expression. I think everyone know about this. It is a common debate in our India at present. That what is the freedom of speech and expression? What does it include? See, one more thing is that freedom of speech and expression, it also includes right to information. RTI Act, it is also speech and expression. It also includes a right to information, and it also includes a freedom of press. The freedom of speech of expression, it is not restricted only to the person. The person can apply it through the agency of press also. It was asked to Dr. Ambedkar that why he has not specifically mentioned the freedom of press in drafting Article 19, like they we had, or like the people of US, citizens of the US had under the First Amendment of US Constitution. They have a unrestricted freedom of press, but we haven't mentioned it clearly. But it can be conferred or expressed or constructed through the 19 clause 1a, because press is ultimately something which is also exercised by the citizen. And another thing is that Article 19, it is only restricted to the citizens. Non-citizens or alien cannot demand or demand for the enforcement of this side, or cannot take a plea of the protection of this side. The right of freedom of speech and expression, be to assemble peacefully and without arms. Third is to form associations or union, like trade union, truck union, or anything, or associations or this thing. D, to move freely throughout the territory of India. E, to reside and settle in any part of the territory of India. F, it has been deleted. It has been repealed after 44th Amendment. F part was related to right to acquire, hold, and dispose of property. It was repealed by Article 40. It was repealed by Constitution 44th Amendment Act 1978. 1970.
Okay, we will discuss right to property vis-a-vis Article 31. Okay, sure. And Article 19 clause 1 clause G, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. These are the fundamental freedoms which are granted under Article 19. But not like a US Constitution, which provides or grants unlimited rights and freedom of expression. We have certain restriction over them under Article 19, Clause 2, 3, 4, 5, 6. These talks on the reasonable restriction which can be imposed on these fundamental rights. That there's nothing is absolute or nothing is without any obstruction. The rights do have some duties, and in India these rights do have some limitation, and this limitation are reasonable restriction. Reasonable restriction like can be public order, decency or morality, friendly relation with the foreign state, in relation to a contempt of court, defamation or incitement of offense. These are some ground which are being on the basis of which Article 19 and the exercise of Article 19 can be restricted by the state. And if in case of any controversy, it is depend upon the court to determine whether the reasonable restriction imposed were reasonable or not. And okay, after Article 21, we will discuss something on the relation of Article 14, 19. Next is Article 20. Do we need more discussion on Article 19? Or should I move forward? Please tell me. ये एक क्वेश्चन था कि वो थोड़ा एक बार आप फिर बता देते कि जो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं उनके लिए कौन से फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अप्लाई नहीं होते उन पे। जो कि देखिए आप कि फॉरेन सिटीजन्स है ना, 14 के अंदर वो अवेल कर सकते हैं राइट टू इक्वलिटी, बिकॉज जो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में भी है, ठीक है। एंड और दूसरा आर्टिकल 21 वाला राइट टू लाइफ, ये दो आर्टिकल हैं जो उनके पास जो एलियंस को भी प्रोवाइडेड है, नॉन सिटीजन को भी। और इसका रीजन ये है कि ये यूनिवर्सली है और ये दो चीजें सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के साथ नहीं आती हैं। जो रेस्ट ऑफ जो आर्टिकल है जैसे 15 का हो गया, 16 हो गया, इवन 19 है और आर्टिकल 20 भी नेक्स्ट भी आएगा, these are rights specifically mentioned for the citizen of India, because कहीं ना कहीं ये जो राइट्स हैं इनका रिलेशन हमारी सॉवरेनिटी के साथ भी है, स्टेट रेगुलेशन कर रही है और एक सॉवरेनिटी का इशू भी यहाँ पे आ जाता है। और हमें पता है जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट में भी ये वहाँ पे भी मेंशन है और यूएनओ चार्टर में भी मेंशन है कि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी कंट्री किसी की सॉवरेनिटी के साथ उसमें जो मैटर्स होंगे कंट्री के सॉवरेनिटी को लेके उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। लाइकवाइज जो आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसकी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसमें भी सॉवरेनिटी ग्राउंड है। तो ये जो प्रोविजन है ये एक फॉरेन सिटीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब फॉरेन सिटीजन का कोई भी इशू यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो इंटरनेशनल लॉ भी उसके साथ आता है, समझ रहे हैं। और ये जो मैटर है और ये यहाँ पे नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इन फ्यूचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट आ जाए कि हम ये राइट ओपन कर दे सबके लिए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और मे बी कल को कोर्ट को लगे कि हाँ जी ये राइट जो है ये सबको होना चाहिए, बिकॉज आजकल जो न्यू वेव है इसके लिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, ये वेव कुछ और डायनेमिक फॉर्म में है एज कम्पेयर टू जब ये आर्टिकल राइट आया था उस टाइम इसको कैसे ट्रीट किया जाता था और आज इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। वो एक सोसाइटी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड होता है कि एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज को किस हिसाब से करती है और वो स्टेट बाय स्टेट चेंज होते रहती है। तो वी कैन नॉट से कि ये ही अल्टीमेट है, मे बी दे कैन बी डिफरेंस। उसके लिए टेस्ट रखे जाएंगे, अगर वो टेस्ट को पास करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है वो सब चीज के ऊपर डिपेंड है। बट एट प्रेजेंट जो लॉ है, ये जो आर्टिकल 19 का जो जितने भी फ्रीडम्स हैं वो सभी सिर्फ सिटीजन के लिए हैं और एलियंस इनको नहीं ले सकते। हाँ जी, थैंक यू। ओके और जैसे कि वो मैंने आर्टिकल 14 में भी बताया था कि जो एलियंस के पास ग्राउंड है, यानी कि नॉन सिटीजन, एलियंस भी नॉन सिटीजन, एलियन का मतलब ये नहीं है अभी तक जो कि एलियन हम यूज करते हैं, एलियंस का मतलब नॉन सिटीजन।
कि उनके लिए हमारे पास ग्राउंड था कि उनको इक्वलिटी बिफोर लॉ है, बट वहां पे भी एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर द जो यहाँ पे है अंडर 14 है, उसके अंडर ये इतनी इक्वलिटी नहीं है कि ये नहीं है कि वो जो सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं, लाइक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हो गया या बाकी हो गए, ये राइट भी वो डिमांड कर सकें। जो वो जो है जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि एलियंस के लिए राइट है, वो वहां तक ही होगा। ये बाकी जो सिटीजन को जो स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं वो नहीं डिमांड कर सकते, बस अपने ही जो डिमांड जो इनके राइट्स हैं उसमें रह सकते हैं। वो भी एक रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर है एलियंस के लिए। नाउ आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। फर्स्ट आ गया, इसको फर्स्ट को कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ जो टर्म है वो इसी फर्स्ट के लिए है। No person shall be convicted of any offence except for a violation of law in force at the time of commission of that act charge as an offence, nor be subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offence। ये जो है ये आर्टिकल हमारे क्रिमिनल लॉ के साथ भी चलता है। अंडर दिस आर्टिकल ये चीज मेंशन की गई है कि अगर कोई भी पर्सन है, लाइक अगर अब भी मैं कोई क्राइम करता हूँ, क्राइम वो तभी माना जाएगा कि जब हमारे जो क्राइम की डेफिनेशन है वो ये है कि जो आईपीसी जिसको क्राइम कंसीडर करती है बस वही क्राइम है। कि जो हमारा लीगल स्टैट्यूट क्रिमिनल लॉ जिस चीज को डिफाइन करेगा इट इज ऑफेंस की ओमिशन और कमीशन ऑफ एनी एक्शन एक्ट, इट इज कॉल्ड एज एन ऑफेंस, वही होगा। अगर एट प्रेजेंट डिस्कोर्स ऑफ टाइम में अगर उस चीज को ऑफेंस नहीं माना गया है, सी जैसे केस हो गए कि जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम पे आजकल बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम के केसेस हैं या डाटा प्रोटेक्शन के केसेस हैं, साइबर क्राइम्स हैं, वो कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो आज तक हमें पता नहीं था कि इन चीजों को भी हम क्राइम मान सकते हैं। जैसे कि साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, डाटा लीक हो गया, डाटा ब्रीच जो इंटरसेप्शन जो मेड होती हैं, या पर्सनल डाटा का एक्सेस अपने पास स्टोरेज रखना। जब तक ये डिफाइन नहीं किए गए थे तो उसके लिए हम ये प्लीड नहीं कर सकते या वो बंदे को किसी भी बंदा जो उस चीज के अंदर चार्ज नहीं कर। दो माइट भी ऐसा हो सकता है कि एक जब कोई सिचुएशन आई हो, जैसे सत्यम कंप्यूटर का हो गया, बेशक उसको हमने कॉर्पोरेट लायबिलिटी में डाला, उसके बाद अगर हम कोई न्यू प्रोविजन बनाते हैं उस केस के ऊपर, वो जो पर्सन था जिसने वो कमीशन किया था जिसके बाद रिकॉग्नाइज्ड हो लॉ, उसको हम उसके लिए क्राइम के लिए उसको हम पेनल्टी है उसको हम अक्यूज नहीं, उसको हम कन्विक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जब उसने वो एक्शन किया एट दैट टाइम वो ऑफेंस नहीं था। यही चीज अप्लाई कर सकते हो हमें इंडायरेक्टली, ये रीजनिंग उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट क्लास में हमने केस की बात की थी श्याम मेनन वाले केस में, श्याम मेनन वाले केस में क्या बात हुई थी कि उन्होंने जब वो मैंने बताया था कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, पब्लिश किया था, आर्टिकल अंडर प्रेस रेगुलेशन 1932 1931 जो है उनकी कंट्राडिक्शन में है। तो दैट मीन्स जब उन्होंने वो काम किया तो अकॉर्डिंग टू द लीगल जो टेक्निकलिटी है तो वो चीज क्राइम थी। तो इसका मतलब कि उनको वो चीज क्राइम माना जाएगी। जब आपने कोई काम किया है तब वो क्राइम थी, तो अब उसके लिए आप रेस्क्यू नहीं ले सकते कि अब वो लॉ चेंज हो चुका है। अब आप यही चीज ले सकते हैं जैसे कि करप्शन होगी, पॉलिटिकल करप्शन होगी, जैसे अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात है या कुछ भी है, जैसे ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है, अभी तक हमारे पास कोई लॉ नहीं है कि हाँ जी कि कितनी कितनी पॉलिटिकल फंडिंग की जाएगी, कि उसका कैसे रेगुलेट करना है, वो पूरा एक एक्सप्रेस और एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। मे बी इन केस फ्यूचर में हमारे पास कोई लॉ ऐसा आ जाता है तो हम ये नहीं करते कि जो पिछली चीज है हुई है उसको हम क्राइम मान के चलें। बट इसमें एक दो डिफरेंस है, एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स होते हैं जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या उसमें भी पढ़ोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ोगे, जहाँ आप लॉ में जब पढ़ते पढ़ते आप आई थिंक उसमें भी है एक और ईडी किसमें आती है, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एक्ट है पीएमएलए, वहाँ पीएमएलए में उस एक्ट में भी आप पढ़ोगे कि जो एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में और क्राइम में फर्क होता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में है कि जो पीछे वो क्राइम किया था उसके जो आपको बेनिफिट्स है उसके बेसिस पे आपने नेक्स्ट अभी तक जी रहे हो, वो एक डिफरेंस होता है। और वो एक कि जो इकोनॉमिक क्राइम है उनको कुछ और वे में देखा जाता है, इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं उनको कुछ, बट जो यहाँ पे इसको अगर हम दूसरे बॉडीली या कॉर्पोरल क्राइम्स के बेसिस कंसिडर किया जाए तो वो एक डिफरेंट टाइप की इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट टाइप की अंडरस्टैंडिंग है।
तो अंडर आर्टिकल 1 जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि अगर आपको कोई पकड़ता है जो अभी तक ऑफेंस नहीं हुआ है, जस्ट लाइक आपकी क्लासेस बंक करना, क्लासेस बंक करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, विशेष स्टैट्यूटरी क्लॉज में है, आप पे कोर्ट पे मुकदमा नहीं हो सकता, कल को रूल बन गया तो आप कह सकते हो कि भाई ये जब हुआ था तब ये ऑफेंस नहीं था, इन फ्यूचर बेशक आ जाए ऐसा लॉ, तो वो बात अलग है। वैसे ही इसका पार्ट 2 है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसको कहते हैं डबल जियो बॉडी। हाँ, आई थिंक डबल जियो बॉडी कहते हैं, नो जियो बॉडी, डबल जियो बॉडी। अंडर आर्टिकल जो 2 है इसके अंदर ये बात है कि हाँ, कि अगर आपको एक बार किसी चीज के लिए ट्रायल किया गया हो और आपको उसके लिए आप गिल्टी प्रूव हो, प्रोसिक्यूट किया गया हो, मे बी आप उसमें कन्विक्शन में आप अक्यूट हुए हो या कन्विक्ट हुए हो, वो बात अलग है। बट अगर आपको एक किसी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया गया है तो सेम ही ऑफेंस के लिए आपको दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। बट उसमें भी एक टेक्निकली अगर आप जाओगे तो डिफरेंस है कि जैसे कि एक केस था मकबूल हुसैन वाला केस था, पता नहीं कौन सा था, उसमें ये था कि उनकी पहले कि कोई पर्सन बाहर से आ रहा था, कस्टम ने उनको रोका, कस्टम ने वहां पे उनका जो इलीगल जो उन्होंने यहाँ पे चीज को यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तो कस्टम्स ने उनको कंसिडरेट किया, कंसिडरेट करने के बाद उनकी वो वहां पे फाइन लगाया, उसके बाद उनकी कोर्ट में उसका ट्रायल चला, तो वहां पे उन्होंने किया कि नहीं जी मेरे साथ पहले ही ट्रायल हो चुका है। कोर्ट का ये मानना था कि जो आर्टिकल 20 के अंदर जो क्लॉज 2 के अंदर जो ग्राउंड पेंशन है वो सिर्फ जुडिशियल ट्रायल के लिए है, क्वासी जुडिशियल के लिए। जो कस्टम ने किया वो एक प्रोसीजर था, वो ट्रायल नहीं था, आपको वहां पे आपकी कन्विक्शन नहीं किएगी, आपका सिर्फ गुड्स जो थे, सामान थे जो वहां पे इलीगल लगे, उन्होंने वो रोका। आपकी लाइबिलिटी है या क्रिमिनलिटी है या आप कन्विक्ट होंगे, वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, वो उसमें डिटरमाइन होगा। ये आर्टिकल 2 कहता है कि एक पनिशमेंट के एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट, 2 बार प्रोसिक्यूट नहीं किए जा सकते, मोर देन 1 टाइम आप प्रोसिक्यूट नहीं किए जा सकते। बट ये बात अगर सीआरपीसी पढ़ोगे उसमें भी मेंशन है कि चार्ज में भी जैसे मेंशन है कि अगर वो ही ऑफेंसेस, वो ही जो सर्कमस्टेंसेस के ड्यू कोर्स में ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि कोई और चार्ज भी बन रहा था, कि कोई और ऑफेंस भी हुआ है, दैट डजंट मीन कि आप ये प्ली लोगे कि ये पहले मेरे साथ हो चुका है, पहले मैंने ट्रायल दे दिया है, अब नहीं होगा। इन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर न्यू कुछ एविडेंस मिलते हैं या न्यू सर्कमस्टेंसेस ऐसी क्रिएट होती हैं जहां से पता चले कि कुछ और जो ऑफेंस चार्ज किया गया था उससे कुछ और भी पहले भी बेशक आप पहले प्रोसिक्यूट किए गए थे, बट बाद में जो है वो कोई और ऑफेंस भी था साथ में आपने किया हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि एक ही सिनेरियो का एक ही चार्ज बनेगा या एक ही ऑफेंस होगा ये। बट राइट यहाँ तक है कि एक ही ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा बार आप प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते। थर्ड जो राइट आ गया है वो कि नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be witness against himself. It is self incrimination कि आपको ये मंजूर, आपको ये दबाव नहीं डाला जा सकता या आपको ये नहीं आप I'm sorry, ओके, सॉरी, आई विल कंटिन्यू कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि आपके ऊपर ये प्रेशराइज नहीं किया जाता या आपको ये नहीं किया जाता कि आप अपने खिलाफ खुद बयान दो, इंक्रिमिनेशन, जिसके बेसिस पे नार्कोटिक टेस्ट है जो है इंडिया में बैन है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका केस है, जैसे एविडेंस का केस है कि आप अपने खिलाफ ही खुद आंसर दो, इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट देने के लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। इट इज और इससे ही अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका राइट टू रिमेन साइलेंस, कि अगर आप शांत रहना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते, आप वो भी रह सकते हो। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, ये उनके लिए है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हाँ जी, तो फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जा रहे हैं, आर्टिकल 21। आई थिंक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे, आर्टिकल 21 को द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
आपकी क्या समझ आया आपको ये इसकी रीडिंग से? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और आर्टिकल 21 तो ये द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 चले, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का चले, तो कैपिटल पनिशमेंट भी गलत है। आप तो किसी को मार नहीं सकते हो, स्टेट के पास पावर नहीं है किसी को मारने की। बट जो उसकी इंटरनल जो उसकी लिटरल जो उसके कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इट गिव्स अ प्रोविजन टू द कोर्ट to curtail the enjoyment of life, right of life of individual from enjoy कि कुछ या कुछ grounds के ऊपर the state can make provision in which they can hamper or hinder the enjoyment of this right। और बेसिकली जो बात है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ी ही नैरो टर्म हम कह सकते हैं कि जो ऐसे कंसीडर की जा सकती है कि प्रोसीजर ये है कि कोई भी प्रोसीजर बना। अब प्रोसीजर में क्या मतलब हो गया कि अगर स्टेट का कोई भी प्रोसीजर बना देती है कि हाँ जी जो भी हमारे खिलाफ बोलेंगे हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये रूल तो नहीं बन सकता। बट अकॉर्डिंग टू जो लिटरल रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये तो ये हो सकती है कि कोई भी प्रोसीजर जो कोई भी लॉ एक वेल फ्रेम या जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर हमने मेंशन किया गया है एक लॉ बनाने के लिए, अगर वो पूरी प्रोसीजर टेक्निकलिटी के अकॉर्डिंग बना गया है तो दैट मीन्स वो बना गया, तो दैट मीन्स उस लॉ के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो। और यही बात थी कि अगर आर्टिकल 21 को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक के गोपालन केस से चलना पड़ेगा, अगर हम चलें तो इन डेप्थ में, क्योंकि ये और ये मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर भी आपको ये आर्टिकल समझना चाहिए। 21, 19 और 14 ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी इंक्लूड होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कहीं पे होगा, दो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी जो वे ऑफ लिविंग है, जो हमारी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक सोसाइटी में एग्जिस्टेंस है उसके साथ डील करता है। बट ये उनमें से कुछ हम 3 आर्टिकल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं कि जो टोटली पर्सनल, जो मेरी प्राइवेसी, जो मेरी पर्सनल थिंग्स हैं उनके साथ भी ये रिलेट करता है। क्योंकि राइट टू लाइफ, जो लाइफ इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ। की लाइफ नहीं है तो एग्जिस्टेंस कहाँ से होगी? तो पर्सन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ। अगर स्टेट को हम राइट, अल्टीमेट राइट दे दें कि आप लाइफ ले सकते हो ऑन बेसिस ऑफ एनी प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब यही हुआ कि आपने कोई भी लॉ जो बनाया है, किसी भी प्रोसीजर, आपने पार्लियामेंट के पूरी सेशन फॉलो की, आपने पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाने के लिए जो आपको एक वो टीम, वो आपको एक स्टडी चाहिए होती है या कमेटी की फॉर्मेशन होती है, वो आपने की, आपने वोटिंग करवा ली, 0 हाउस सेशन रख लिए, सभी सेशन रख लिए, उसके बाद आपने प्रेसिडेंट की कंसेंट ले ली, तो दैट डजंट मीन उसके अगर वो ले ली तो कोई भी लॉ होगा वो तो एप्लीकेबल है। वो बेशक आपकी जान ले रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो। अब जान लेने का मतलब यही नहीं है कि आपको जान से मार देना, क्योंकि जान लेने में बहुत चीजें होती है। मेयर एग्जिस्टेंस में एनिमल एग्जिस्टेंस जो सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन वो है, मेनका गांधी केस में भी है, उसके बाद भी है कि राइट टू लाइफ डजंट मीन्स मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, दैट यू आर जस्ट ब्रीदिंग or living here, eating and breathing. It doesn't mean that. It includes various aspects of the life that person perform within his whole life. तो उसके लिए जो केस, जैसे कि ए.के. गोपालन का केस था, उसमें उनको अरेस्ट किया गया ए.के. गोपालन को, उन्होंने प्ली ली कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में आपने बेशक मुझे डिटेंशन लॉ के अंडर कंटेन किया है, बट ये कहीं ना कहीं मेरी ये पर्सनल लिबर्टी है, ये उसको कन्फर्म कर रहा है, ये अगेंस्ट जस्टिस या इक्वलिटी की जो प्रोविजन है हमारे सुप्रीम को, जो हमारे वो प्रीएम्बल के, ये उनकी कंट्राडिक्शन में है। बट कोर्ट ने वहां पे नेगेटिव किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोसीजर जो भी अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी प्रोसीजर से जो कुछ लॉ बनाती है या कोई रेगुलेशन, और लॉ की आपको डेफिनेशन पता है, इट डजंट मीन ए पार्लियामेंट्री लॉ, रेगुलेशन, ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर जितने भी हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कुछ बनाए जाएंगे, वो सभी लॉ में आते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो मेन कंट्रोवर्सी इस केस में है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उनमें उनका पासपोर्ट को इंपाउंड किया गया था, वो फैक्ट है, और ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट जजमेंट है इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में। आई थिंक ये 700, 600 प्लस 500 प्लस पेजेस की जजमेंट है मेनका गांधी केस की, अलॉन्ग विद पुट्टा स्वामी,
वो 545 पेजेस की है। तो मेनका गांधी केस में जो मेन क्वेश्चन ये था कि जो कि उन्होंने प्ली ये लिया कि जो मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया है, मुझे यहाँ से मूव नहीं करने दिया गया है, वो आर्टिकल 19 और 21 में मेरी जो पर्सनल लाइफ, वो जो फ्रीडम है मूवमेंट का, प्रोटेक्शन ऑफ जो लाइफ में जो मेरी पर्सनल लिबर्टी है, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट किया है। इस केस में कोर्ट ने जो एक मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट रही है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के टाइम पे भी, कि हमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ रखना है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखना है, जो अमेरिकन प्रिंसिपल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कंटेन करती है कि जो एक लॉ है, इट शुड नॉट बी just a fair reasonable law, but it should also should complete, or we say should, जो एक बेंचमार्क है नेचुरल जस्टिस का, it should comply with the principle of the natural justice, that the law should not be only legal, but it should be a fair, just and non arbitrary। ये 3 ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे एक लॉ होना चाहिए, और ये 3 ग्राउंड जो हैं इनके बेसिस पे डिटरमाइन किया गया जाएगा कि जो एक लॉ बनाया गया था वो आर्बिट्रेरी है या नहीं है, कि जो आप लॉ बना रहे हो वो कहीं आपके आर्टिकल जो 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको कर्टेल करता है या नहीं करता है। उसके लिए ये ग्राउंड मेंशन करना जरूरी है। इट कैन नॉट बी कंसिडर ओनली अनफेयर कि वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के द्वारा बनाया गया तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये लॉ है, बट आपको ये चीजें देखने पड़ेंगी कहीं लॉ फेयर और जस्ट एंड आर्बिट्रेरी है या नहीं है। और मेनका गांधी केस था जिसमें एक गोल्डन ट्रायंगल का टेस्ट रखा गया किसी भी लॉ को चेक करने के लिए या किसी भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन को चेक करने के लिए गोल्डन ट्रायंगल का रखा गया। वो गोल्डन ट्रायंगल टेस्ट था आर्टिकल 21, 19 और 14 का। इन तीनों का ट्रायंगल किसी भी को आज के प्रेजेंट टाइम में किसी भी अगर आर्टिकल को हम क्वेश्चन करते हैं अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, कोई भी जो लॉ बनाया जाता है कि वो फेयर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सोनेंस में है या इट इज इन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो वाइड है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम यही 3 आर्टिकल की हेल्प लेते हैं, 21, 19 और 14 से हम ये देखते हैं कि वो जो क्लासिफिकेशन है या जिस हिसाब से भी है वो आर्बिट्ररी है या नॉन आर्बिट्ररी है। 19 बताती है रिस्ट्रिक्शन, कि जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं है। और 21 जो है उसका जो है प्रोसीजर जो उसके लिए बनाया गया है कि वो ड्यू प्रोसेस में था या नहीं था। मेनका गांधी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोसीजर जहां पे जो इंडियन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, इट इज सेम एज अ ड्यू प्रोसेस अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसीजर विच इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी, ये है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो जो लॉ कोई टेक्निकलिटी ग्राउंड के हिसाब से बनाया गया है, बट अगर वो अनफेयर होगा, अनरीजनेबल होगा या अनजस्ट होगा तो इट इज नल एंड वॉइड। और इसके बाद ही से ही जो मेनका गांधी के पास बाद से ही जो आर्टिकल 21 है इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये वाइड होता गया, इसके अंदर वेरियस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया। अब इससे ही हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो राइट्स है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, जैसे राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू वर्क हो गया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हो गया, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ हो गया, बंधु मुक्ति मोर्चा जैसे मैंने पीडीएफ में भी मेंशन किया है, राइट टू लाइवलीहुड हो गया, राइट टू मेडिकल केयर हो गया, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू प्राइवेसी। ये सब डिफरेंट एक्सपर्ट्स गिने के कि जो सभी, और ये ही नहीं इससे भी आगे हैं, ये सम ऑफ द एक्सपेक्ट्स हैं राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, उनमें क्या क्या इंक्लूड होगा। जो राइट टू प्राइवेसी है ये तो अभी रिसेंटली पुट्टा स्वामी जो केस हुआ है, जो आधार कार्ड वाला केस हुआ है, जस्टिस जेएस पुट्टा स्वामी केस में, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 बेंच ने इन क्यूरिंग जजमेंट में कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी का भी अलग इशू था इंडिया में, जैसे AK गोपालन केस हो गया या एडीएम जबलपुर केस है, आप लिख सकते हैं एडीएम जबलपुर केस, जिसमें भी प्राइवेसी के अगेंस्ट कहा गया था। और MSM शर्मा केस है,
जिसमें भी प्राइवेसी को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं माना गया था। बट फाइनली ये जो डिबेट वो प्राइवेसी का राइट है क्वेश्चन है, ये खत्म हो चुकी है पुट्टास्वामी केस के बाद। और प्राइवेसी जो है वो प्राइवेसी एट प्रेजेंट जो आर्टिकल 21 के अंडर जो हमारे राइट टू लाइफ में आती है, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल वर्ल्ड प्राइवेसी। वो प्राइवेसी हमारे डिजिटल स्पेस एंड डिजिटल हमारे मोबाइल नेटवर्क्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, फेसबुक हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, वहां तक एक्सटेंड होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। प्राइवेसी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी तक वो लॉ को हम एक्सटेंड करते हैं और इन सभी चीजें इसके बीच में इंक्लूड होती है। इसके लिए आप बेटर है कि आप पुट्टास्वामी जजमेंट रेफर कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए। वैसे ही एक वहां पे राइट आता है, इंटरेस्टिंग राइट है, राइट टू डाई। क्या हम मान सकते हैं कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूडेड राइट टू डाई? एनी कमेंट कि राइट टू योर डाई है उसको हम कंसिडर करेंगे कि इट इज राइट टू डेथ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मान्यता दी जाती ना, और वाला ऑफेंस आईपीसी के अंदर 309। उस पे वो तो हाँ वो आईपीसी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो होता है नहीं होता वो डिबेट अलग है। अब जैसे कि जो सेक्शन 303 है आईपीसी की, जिसमें ये है कि कोई पर्सन पहले जिसने कोई ऑफेंस किया हो, जिसकी डेथ पेनल्टी हो, अगर वो सेकंड टाइम वो ऑफेंस कमिट करता है जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी होगी, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन इज द ओनली पनिशमेंट। उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसको एग्जीक्यूट किया गया। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वो केस है, उसमें तो उसको डिबेट आई, वो डिबेट अलग है। आईपीसी को और इसमें भी डिबेट अलग है। राइट टू डाई को डेथ को राइट टू डेथ या राइट टू डाई के अगर आप उस चीज को चलना होगा तो ये ज्ञान कौर का केस हुआ था स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कहा गया था कि देयर इज नो सच काइंड ऑफ राइट टू डेथ। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग डिबेट आई है अन्ना रामचंद्र शानबागू केस में, यूथनेशिया। यूथनेशिया तो आपने सुना होगा कि एक डिबेट है, इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट चल रही है कि यूथनेशिया क्या चाहिए, कि इट शुड बी अलाउड और नॉट। क्या मानिक? हेलो। हाँ सुना है मैंने, इसमें भी कोई केस भी था, मुझे याद नहीं। हाँ, अरुणा रामचंद्र शानबागू केस, वो उन्होंने परमिटिव वेजिटेशन स्टेट्स होती हैं डिफरेंट एक लाइफ के मेडिकल, जब आप जाइए तो वो वेजिटेशन स्टेट है, पैसिव पार्शियल वेजिटेटिव स्टेट एंड परमिटिव वेजिटेटिव स्टेट। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनका 33 ईयर के लिए वो एक वेजिटेटिव स्टेट में रहे हैं रामचंद्र शानबागू। शी वॉज अ रेप विक्टिम। हाँ, और 33 ईयर उन्होंने से एक बेड पे वेजिटेटिव स्टेट पे निकाला है, तो उनके लिए प्ली लिया गया था कि राइट टू यूथनेशिया का राइट जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होता है, और 57 आई थिंक 57 और 58 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको वो भी उसको रिकॉग्नाइज भी करती है। स्वीडन आई वाज थिंक स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज वो लॉ को। तो वो भी तो एक काइंड ऑफ राइट टू डेथ है ना, कि पर्सन का, कि राइट टू यूथनेशिया। अभी रिसेंटली एक डिबेट हुई थी, महाराष्ट्र के थे बने एक कपल थे, देखो एज ओल्ड कपल, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही प्ली डाला था कि हमें यूथनेशिया अलाउ किया जाए, कि हमारी कोई आगे प्रोजनी नहीं है, हमारा कोई आगे सक्सेसर नहीं है, और हमने अपनी एज अच्छे से निकाल लिया और हम दोनों इकट्ठे मरना चाहते हैं। उस पर भी एक अभी डिबेट चल रही थी पहले पीछे, ये राइट टू डेथ के ऊपर। बट एट प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर राइट टू डेथ कोई लॉ वो एक राइट नहीं है, बट सम कंडीशन में जो परमिटिव जो पार्शियल वेजिटेटिव स्टेट है उसमें यूथनेशिया अलाउ किया गया है, उसके लिए गाइडलाइंस है पर्टिकुलरली। हाँ जी, एनी क्वेश्चन आर्टिकल 21 पे? और एक और बात है कि आर्टिकल 21 ही है जिसके बेसिस पे जो क्लीन इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट लॉ को भी एक्सटेंड किया गया है, आर्टिकल 21 के बेसिस पे ही। इनके ऊपर अगर आर्टिकल 21 पे और इन्वायरमेंट के रिलेटेड अगर आपको इशू अगर जानने हैं, केसेस जानने हैं, तो उनके लिए एमसी मेहता, उनके केसेस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उनके सीरीज ऑफ केसेस हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी से लेके उसके बाद से लेके इवन कि आपको याद होगा कि पहले जब हम थिएटर में मूवीज देखते थे तो मूवीज में भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वायरमेंट। मूवीज में, पिक्चर में, टीवी में भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो सीरीज ऑफ केसेस हैं एमसी मेहता के, आप उनको रेफर कर सकते हो इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के केसेस के लिए। बट जो एक इन्वायरमेंट है, राइट टू लिव एंड सर्वाइव अंडर quality of unclean environment,
it is also a fundamental right under Article 21, the protection of life and personal liberty. इससे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है. Any question regarding Article 21? Okay. Next, Article 22, protection against arrest and detention in certain cases. बेसिकली जो अगर आपने सीपीसी की क्लास हुई है, आपने सीआरपीसी कुछ पढ़ा है अभी तक थोड़ा बहुत या नहीं? चलो, सीआरपीसी में भी एक प्रोविजन है कि कोई बंदा अगर किसी को पुलिस कोई अरेस्ट करती है, उस अरेस्ट के बाद जो अरेस्टेड पर्सन है, डिटेन्ड पर्सन है यानी डिटेनी जिसको हम कह सकते हैं, उसको 24 आवर के विद इन मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है उसकी अरेस्ट को लेजिटिमाइज करने के लिए कि कोई पर्सन है 24 आवर से ज्यादा अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट मेंशनिंग प्रोड्यूसिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट. ये एक ग्राउंड है. और आर्टिकल 22 है हमारा, नो डिटेंशन विदाउट इन्फॉर्मिंग द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, नॉट टू बी डिटेन, not to be denied the right to consult and to defended by a legal practitioner of his choice. ये हमें राइट देता है कि आप किसी को भी जो कोई भी अरेस्ट होगी जो वायलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो अनलॉफुल होगी. बट उसके साथ ही ये जो आर्टिकल है ये अपने बीच में ही अपने जो मेन रूल है कि 24 आवर के अंदर उसको प्रोड्यूस करना मजिस्ट्रेट के, जो मजिस्ट्रेट उसकी अरेस्ट को वैलिडेट करेगा. एंड अनदर थिंग इज डिटेंशन विदाउट इन्फॉर्मिंग द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. उसके जो राइट्स टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर है, ये राइट्स को आपको डिनाई नहीं करना है. इनको एक प्रोविजन मेक करता है. बट एक्सेप्शन नॉट अप्लाइड टू एलियन. एक तो एलियन जो है वो ये प्रोटेक्शन जो अंडर आर्टिकल 22 है वो नहीं अवेल कर सकते हैं. अनदर थिंग इज दैट कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा कि अनदर थिंग इज दैट कि पार्लियामेंट कैन इम्प्लीमेंट और इनेक्ट लॉज स्पेशल लॉ रिगार्डिंग डिटेंशन. उसमें ही ग्राउंड मेंशन किया गया, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन longer than period of 3 months unless एक advisory board बनाया जाएगा consisting of person who are or have been qualified to be appointed as a judge of a high court as reported before the expiration of said period of 3 months that there is an opinion sufficient cause for the detention. मतलब ये है कि अगर हम राइट को पढ़ें तो राइट ने अपनी एक्सेप्शन, अपने जो मेन बेसिक राइट है उससे ज्यादा उसकी एक्सेप्शन को इंपॉर्टेंस दिया गया है. राइट ये है कि आपको डिटेन नहीं कर सकते हैं 24 आवर से ज्यादा विदाउट मैजिस्ट्रेट के प्रोड्यूस किए. आपको लीगल कंसल्टेंसी नहीं डिनाई कर सकते हैं. ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए बिना आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है तो उसके से जो कोई भी ऐसे लॉ डिटेंशन लॉ बनाया है तो उसके अंदर आपको 3 महीने तक रख सकते हैं. इसके बाद एक और प्रोविजन है, और इसके बाद एक होगा कि अंडर सर्कमस्टेंसेस, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे पार्लियामेंट एक प्रिस्क्राइब कर सकती है कि that a class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventing detention without obtaining the opinion of advisory board in consonance with the subsection 4. कि जो पहले की आप एक सिंपल लॉ बना सकते हो, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है उसके अंदर भी कोई भी अगर लॉ बनाया डिटेंशन का उसके अंदर 3 महीने से ज्यादा नहीं रखना है. 3 महीने से ज्यादा तब भी रखना है जब एडवाइजरी जो कमेटी है जो एक बोर्ड बनाया गया है उनकी उस पे उनकी रजामंदी से या उनका अगर वो सफिशिएंट कॉज देते हैं ऐसी ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसमें इसको 3 मंथ से ज्यादा आप डिटेन कर सकते हो. और उसके साथ ही अनदर जो अमेंडमेंट के बाद प्रोविजन जो प्रोविजन इसमें ही आर्टिकल में दिया गया है कि पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है ऐसी कि कुछ क्लासेस ऑफ ऑफेंस जैसे टेररिस्टियल एक्टिविटीज होगी या यूएपी हो गया या हमारा एनएसए हो गया, जेएनके स्टेट में पीएसए हो गया, इन लॉ में जो एक लिमिट थी 3 मंथ की उसको भी आगे करते उसको भी एक्सक्लूड किया जा सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड की जो आपको रजामंदी लेनी पड़ती है, जहां आपको एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर 3 मंथ, आप उस कंडीशन को भी हटा सकते हो पार्लियामेंट फॉर सम क्लास और क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस के लिए.
और जो मैक्सिमम पीरियड है वो पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली अगर हम इस आर्टिकल को क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग भी करें तो ये अपने में ही एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, पैराडॉक्स है। एक जगह आप कह रहे हो कि आपको डिटेन नहीं कर सकते, बट दूसरी जगह पे वो ही अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी गई है कि वो स्पेशल लॉ बना के कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको डिटेन ज्यादा भी कर सकते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन? क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट जो हैं वो यूएपीए एनएसए इसके अंडर डिटेन किए गए हैं। तो ये ही एक रीजन है जो ये अभी तक यूएपीए या एनएसए जो जैसे एक्ट हैं वो अभी तक कॉन्टिन्यूएंस में है। हाँ, एनी क्वेश्चन? Next is Article 23, prohibition of trafficking in human beings and forced labor. Literally, trafficking in human beings and beggar and other similar form of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with the law. Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory services for public purpose, and in imposing such services, the state shall not make any discrimination on the ground of religion, race, caste, or class, or any of them. ये बेसिकली जो आर्टिकल 23 है ये एक कॉन्सोनेंस में चलता है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ। 39A और B उनके साथ भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग कि कोई भी जो इवल है। अब एक चीज है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजों को सर्टेनली डिफाइन किया है। अब ट्रैफिकिंग को जब आप यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड को ला रहे हो, फोर्स लेबर को या ट्रैफिकिंग को, कहीं ना कहीं ये चीज शो करती है कि वी आर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देमसेल्फ रिकॉग्नाइज कि ऐसे क्राइम होते हैं। इट इज अ वेरी बिग थिंग टू रिकॉग्नाइज बेसिकली कि हमारी सोसाइटी में ये चीजें प्रेजेंट है। मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई चीज होती है वी ऑलवेज डिनाई कि ऐसा नहीं होता, कि पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल लोग ऐसा करने लग पड़े। बट ये आर्टिकल कहीं ना कहीं शो करता है कि जो ट्रैफिकिंग का इशू है इसको हम पहले से ही कंसिडर करते हैं। 24 साथ में 23 और 24 ये दोनों ही है अगेंस्ट एक्सप्लॉइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में इंक्लूड होते हैं। 24 prohibition of employment of children in factory. No child below the age of 14 shall be employed to work in a factory or mine or engaged in hazardous employment. इस दो आर्टिकल के लिए आप बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्लाल डैम प्रोजेक्ट, एक केस था जेएनके का स्लाल डैम प्रोजेक्ट के ऊपर। हाँ, तो वो दो केसेस आप इस पे रेफर कर सकते हैं, इन दो केसेस के लिए। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, या क्लास को यहीं कंक्लूड करें? आई गेस कंक्लूड करते हैं कि वैसे ही थोड़ा आजकल ऑनलाइन के साथ सबका अटेंशन स्पैन भी कम है और काफी लोग लीव भी कर गए हैं। ओके, अभी आप देखिए जैसा ठीक लगे। हाँ जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक आज की क्लास से या पिछली क्लास से या कोई भी आउट ऑफ दिस भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड या लॉ के रिलेटेड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी स्टेट के रिलेटेड लॉ के, लेकिन कोई भी। आई थिंक फिर आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तक ही आर्टिकल 23 एंड 24। एंड जो आर्टिकल 25 है ये फ्रीडम रिलीजन है, और मैं इसका थोड़ा डिफाइन कर दूं कि ये ही जो आर्टिकल 25, 27, 28 जो ग्रुप है इसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन का है, यही एक्सटेंड होता है और यही शो करता है कि जो एक डिबेट की जाती है कि इंडिया में सेकुलरिज्म वर्ड पहले नहीं था, वो 44th अमेंडमेंट के बाद आया, 44th अमेंडमेंट के बाद आया। तो अब 42nd अमेंडमेंट से पहले कोई इसकी बात नहीं थी, तो इट इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर, या इंडियन ऐसे नहीं है कि जो सेकुलरिज्म पे बात होती है। बट जो ग्रुप ऑफ दिस आर्टिकल है, दिस हेडिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर 25, 26, 27 एंड 28, इट स्पेसिफिकली शो कि जो अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे हैं दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी बिलीव इन अ सेकुलर स्टेट। एंड जो सेकुलर स्टेट से मतलब है, और उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि the meaning of state secular means कि state equally treats theist and atheist, they are treated equally under the protection of state।
कि स्टेट दोनों के लिए इक्वल है, और ना कि सेकुलरिज्म से ये मतलब है कि स्टेट का जो नेचर है वो अथीस्ट नेचर है, बट इट इज अ इंक्लूजन ऑफ ऑल रिलीजन एंड ऑल बिलीफ, whether that belief may be of that belief is a theism in itself or atheism in itself, that is another debate. But for state, it is religion, the right of religion include both the rights. हाँ जी, सो थैंक यू आज की क्लास के लिए। एंड आई एम सेइंग कि अभी मेरी डिसर्टेशन की डेडलाइंस चल रही हैं, तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी 1-2 वीक के गैप के बाद में ये कंडक्ट करेंगे। Okay, thank you. ओके, थैंक यू मनी।